Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to pronounce long vowel sounds, that is, I as in kite, O as in boat, U as in cute. Express needs and feelings. Respond to simple instructions and directions. Relating what is read to their own feelings and experiences. Recognize and write sentences beginning with words that point to something, that is, this, that, these, it, etc., to describe pictures, objects, persons, places, things, etc. ये ऑनरेबल टीचर ये आप देख रहे हैं कि इस एसएलओ में लिखा हुआ है कि टू डिस्क्राइब पिक्चर, अब पिक्चर के बाद ब्रैकेट में एस है, ऑब्जेक्ट के बाद ब्रैकेट में एस है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बाकी भी। सोचा आपको इसका मतलब बता दूं कि ये ब्रैकेट में बाज़ औक़ात किसी नाउन के बाद एस क्यों लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि चाहे वो नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो इसीलिए यानी वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, तो वो दोनों चीज़ों को कवर करती है ये ब्रैकेट्स और इसके अंदर जो एस लिखा होता है। सो इट कुड बी ऑब्जेक्ट, it could also be objects. Classify adjectives of quantity, quality, size, shape, color, and origin. Recognize and use adjectives of origin. ये adjectives of origin जो होते हैं, ये मैं अभी नहीं कह सकता कि आगे कैसा होगा, मगर origin से मुराद है कि जिस मुल्क से किसी का ताल्लुक़ हो तो वो एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इटालियन, एट्सट्रा एट्सट्रा। आर्टिकुलेट, आइडेंटिफाई एंड यूज़ डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स। राइट मल्टी-सिलेबल वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग। डेमोन्स्ट्रेट कन्वेंशंस एंड डायनामिक्स ऑफ ओरल इंटरैक्शंस इन ग्रुप to engage in conversation.